कश्मीर का मेहमान नवाज, राह में पत्थर के टुकड़ों ने दिया पनाह मुझे। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ सामाईन, मैं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे वर्दा आप सबका खैर मकदम करती हूँ आपके फेवरेट स्टूडियो में, स्टूडियो खानियार में। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर और आफियत से होंगे। Walaikum salam. Dear listeners, I'm your host RJ Madeen and I'm thrilled to join you on this extraordinary journey of discovery and wisdom. It brings me immense joy to introduce today's extraordinary guest, a beacon of inspiration and a custodian of culture, Mr. Burhan Hussain, KS officer and cultural officer in DIPR Kashmir. And there you have it. Dear listeners, the first stroke of our canvas painted with the hue of culture, dreams and resilience. Join us in unveiling the many shades of Mr. Burhan Hussein's success as we navigate through the past, present and aspirations for the future. Stay tuned, dear listeners, for an expedition into the heart and the mind of the true cultural torch bearer. Good morning, Mr. Burhan Hussain. Thank you so much for having me. Thank you so much, sir. We are thrilled to have you on a podcast. How are you, sir? I'm great, thank you. Could you please start by sharing about your birthplace and where you grew up? I can speak in English or any other language? Any language. No, it's not necessary. So, I live in Rambagh my entire childhood was essentially जैसे सबका childhood होता है कि मैं नानी हाल में ज़्यादा टाइम स्पेंड किया करता था नानी के पास, बट उसके बाद जब थोड़ा पढ़ाई में मैं पीछे चला गया तो देन माई मदर टुक चार्ज एंड शी गॉट मी कि नहीं अब पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दो, एंड बस मस्ती में यही क्रिकेट खेला करते थे पूरे दिन वहाँ यहाँ. दैट इज हाउ आई हैव स्पेंट मोस्ट ऑफ माई चाइल्डहुड. Where your birthplace? Oh, you told me. Srinagar. What was your favorite subject? It was science always. I really liked maths and science. मेरे उसमें मार्क्स भी अच्छे आते थे, बाकी हिस्ट्री उर्दू I found them boring. Same. What were your role models? मतलब who inspired you in this journey? As a kid, Kalpana Chawla was someone I really looked up to क्योंकि उस टाइम पे I wanted to be an astronaut also. तो Kalpana Chawla was someone I really looked up to her. Then she of course passed away when in that Columbia disaster, her space shuttle crashed. उसके बाद I think as I grew I went to college, I went to high school, etc. So my role models kept shifting, but I think Gandhi is one person whose life philosophy, उनका conflict resolution का, उनका अपने जिंदगी गुजारने का जो वो पूरा तरीका है, that I find very very inspirational. Greetings, Mr. Burhan Hussain. Thank you. I hope you are okay. Thank you. हाँ सर, अगर आपके करियर के रिलेटेड बात करेंगे तो आपके करियर ने बहुत फैसिनेटिंग टर्न लिया है. आपने स्टार्टिंग में इंजीनियरिंग क्यों चुनी थी? What was the reason behind it? No, I'll tell you. मेरा बहुत प्रैक्टिकल रीजन था फॉर डूइंग इंजीनियरिंग कि आई थॉट कि जितने भी करियर ऑप्शंस हमारे पास यहाँ JNK में अवेलेबल है उसमें इंजीनियरिंग आई फेल्ट वाज क्वाइट रिवॉर्डिंग करियर इन इटसेल्फ, है ना. उसमें आप या तो इंजीनियर बने या सिविल सर्विस में जाना उसमें जा सकते हो, आपको MBA करना है वो करो, यू हैव एंडलेस अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल उसमें. नंबर वन. नंबर सेकेंड, आई ऑल्सो वांटेड कि मैं कहीं ऐसी जगह से अपना कॉलेज करूं विच इज वन ऑफ इंडियाज बेस्ट कॉलेजेस, एंड NIT Srinagar does happen to be that is where I've studied. So that really did turn me towards engineering essentially. And also मैंने आपको पहले भी बताया मुझे साइंस मैथ्स वगैरह यही चीज़ अच्छी लगती थी, so it was It is interesting how you transformed from an engineering background to civil services. मतलब what inspired you the most? Because we also belong from a non-med background. मतलब हो सकता है हमें भी इंटरेस्ट डेवलप हो, हमारे listeners को इंटरेस्ट डेवलप हो towards civil services. It would be an honor अगर ऐसा हुआ. I'll tell you what, मेरे ख्याल से डॉक्टर शाह फैसल जब वो सिविल सर्विसेज जब उनका 2010 में हुआ, इट क्रिएटेड अ बिग सेंसेशन इन JNK एंड अक्रॉस द कंट्री फॉर दैट मैटर, एंड अ लॉट ऑफ पीपल जो थे यंगस्टर्स थे तो वो सिविल सर्विसेज की तरफ अट्रैक्ट हुए. वैसे भी मेरे घर वाले जो थे, मेरी मदर खास तौर से, वो पहले बचपन से ही मुझे बोलती थी कि सिविल सर्विसेज के लिए जाओ, KS के लिए जाओ, IAS के लिए जाओ, तो बट मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था इस बात पे पहले. लेकिन फिर जब मैं कॉलेज में गया उसके बाद आई रियलाइज्ड कि yes, this is quite a good option to choose as a civil servant. And फिर मैंने थोड़ा और इसमें देखा कि क्या प्रोफाइल है सिविल सर्वेंट का. I like the diversity of work that we do. जैसे मैं अगर आपको आज बताऊं, I have worked on G20 जब यहाँ समिट हुआ मैंने उसमें भी काम किया है.
प्राइम मिनिस्टर पिछले साल हमारे यहाँ यूटी में आए थे, तो उस चीज़ पे भी मैंने काम किया है. सो यू गेट टू वर्क इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स एंड आई फेल्ट दैट दिस इज समथिंग, मैं बोर नहीं होगा कभी इस चीज़ में, एंड दिस इज समथिंग आई कैन डू. दैट इज वन. सेकेंड इज ऑल्सो द फैक्ट दैट आपके काम से डायरेक्टली आप लोगों को इम्पैक्ट करते हो. ये शायद ही किसी और करियर में ऐसा है कि यू आर इन सच अ पोजिशन जहाँ पे not just 1 or 2 or 10 people, your work directly affects hundreds and thousands of people. I think that responsibility, that spirit and sense of responsibility is what actually propelled me towards civil services, I think. Sir, as you are a cultural officer in DIPR, sir, आपको क्या लगता है कि आप कैसे, आपका वे क्या, विजन क्या है जिससे आप प्रमोट कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं कश्मीर का हेरिटेज कल्चर विद इन द यंगर जनरेशन, जिनको आजकल कुछ उतना पता नहीं होता है हमारे कल्चर के रिलेटेड, विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी? आपको कैसे? देखिए, जो हमारे यहाँ बच्चे हैं हमारी जनरेशन में, छोटी जनरेशन्स में, वो चाहे JNK की बात करें, चाहे हम इंडिया की बात करें, देयर इज अ ग्लोबलाइजेशन ऑफ कल्चर दैट इज हैपनिंग, है ना. सो बिकॉज आपका फ्रीली अवेलेबल है, चाहे सोशल मीडिया हुआ, आपकी यूट्यूब हो गया, आप कोई सा भी मीडियम ले लें, देयर इज एन ईजी एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, है ना. देयर इज एन ईजी एक्सचेंज ऑफ कल्चर्स हैपनिंग, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ ड्रामा, बट ऑल्सो cuisines, your way of wearing clothes, etc. Everything is being it's a flat world essentially. That is one thing that we have to understand कि हम इस दुनिया में रह रहे हैं, ये वो पुरानी दुनिया नहीं है. Firstly, secondly, from the governmental perspective अगर हम देखें, a number of organizations are working, चाहे मेरा कल्चर यूनिट हुआ, हमारी Academy of Art and Culture है, that's a very big organization working in the field of culture. तो हो क्या रहा है कि हम जैसे अगर हम बाकी स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज की बात करें, तो यहाँ से अक्सर एक एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं. हमारे आर्टिस्ट जो है, हमारे बच्चे जो हैं, वो बाहर परफॉर्म करते हैं, सो दैट उनके वहाँ भी पता चले कि JNK का कल्चर कैसा है, कश्मीर में क्या है, जम्मू में क्या हो रहा है. जम्मू में बहुत वाइब्रेंट कल्चर है, हमारे यहाँ पे देयर इज अ लॉट ऑफ थिएटर, देयर इज अ लॉट ऑफ फोक म्यूजिक एक्सेट्रा. ये कल्चरल एक्सचेंजेस करते हैं. दैट इज नंबर वन. नंबर सेकंड, व्हाट वी आर आल्सो डूइंग इज कि जो बाहर वाले स्टेट से, यूनियन टेरिटरी से हैं, वी गेट देम आल्सो, एंड अकॉर्डिंगली हम उनका जो कल्चर है वो सब यहाँ पे डिस्प्ले किया जाता है, राइट. दैट इज नंबर टू. नंबर थ्री इज, अपार्ट फ्रॉम दिस, देखिए जो हमारी आर्टिस्ट कम्युनिटी है, उनको सपोर्ट करने के लिए वी ऑर्गेनाइज प्रोग्राम्स एवरी नाउ एंड देन. पर्टिकुलरली अगर आप अभी का टाइम देखें, in the last 5 or 6 days, I can tell you there has been a culture program from my unit every day. किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, etc. So these are just a few examples. जैसे हम अभी अपना ये जो अपने आर्टिस्ट के लिए हैं वो कर रहे हैं. And also I think there's also another rise of another trend that I see in culture, and which is that a lot of youngsters are getting in touch with the cultural sphere, especially because YouTube and everything, these social media, they've made projecting yourself much easier than before. तो आप देखेंगे बहुत यंगस्टर्स हैं, रैपर्स हैं, आपको मिलेंगे. कोई लेडी है, वो उसने अपना सूफियाना वाला बैंड शुरू किया है. सो दैट, आई थिंक दैट थिंग हैज मेड इट easier for everyone, and we are also encouraging this trend. Thank you so much, sir, for giving us your precious time. This means a lot. We appreciate your insights and expertise as a civil servant. Your dedication to public service is commendable. Any final advice you want to give to our listeners? I would say, see, we are speaking today on the occasion of the 77th Independence Day. And जैसे हमारी independence, it has come at substantial effort, एक long, बहुत लंबी चली है. We should never forget those sacrifices. And in fact, going forward, जो हमारे younger generation, हमारे बच्चे हैं, they should also understand it is not about कि आपको बड़ी बड़ी sacrifices देनी है, लेकिन अपने आप को कुछ किसी चीज़ के काबिल बनाना, उसके लिए आपको बहुत मेहनत लगेगी, बहुत एफर्ट लगेगा, और बहुत सारी sacrifices भी देनी पड़ेंगी. You should draw inspiration from the freedom struggle. You should draw inspiration from the role models, चाहे वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हुए, वो गांधी हुए, सरदार पटेल हुए, any of these people, and you do something great for yourself,
And when you do something great for yourself, it automatically translates into doing something great for your country and for the world at large. I think that is my message. That's a valuable advice, sir. Thank you for your time My pleasure. and sharing your insights with us. It was a pleasure to speak with you and learn about your experiences as a civil servant. Your dedication to public service and the various challenges you face you in your society were truly inspiring. We greatly appreciate your contribute toward our region, towards our society. Thank you once again. We wish you success in your future. Thank you so much. Thank you so It much, was a pleasure sir. being here. I know that you're curious, I know that you're strong, but life can be